Hello everyone, welcome back to a new channel. Students, today we are going to talk about two major issues that are shaping our planet and our future. All right? So, first, in the first article, we will explore how the climate crisis is making marine heat waves worse. And this is leading to mass fish deaths, coral bleaching, and destruction of underwater ecosystem. All right. And then we'll talk about India's ongoing struggle with thermal power plant emissions. Like the government has recently pushed back deadlines for pollution control. So this has raised big questions about air quality and the public health. So stick with us as we break it all down in simple terms. All right, let's start with the marine heat waves or MHWs. MHWs को short form में कहते हैं. Okay, so MHW stands for marine heat waves. See, imagine a heat wave on land, extremely hot temperatures that last for days or weeks. अभी लास्ट ही समर में हमने हीट वेव एक्सपीरियंस किया था, राइट? नाउ पिक्चर दैट हैपनिंग इन द ओशन व्हेन सी टेम्परेचर्स rises 3 to 4 degrees Celsius above normal for at least 5 days. तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर 3 to 5 days 3 to 4 degrees टेम्परेचर राइज हो जाता है फॉर at least 5 days, okay, for at least 5 days, then it is called marine heat wave. But students, unlike land heat waves, marine heat waves can last for months or even years. So this have devastating marine this devastates marine life. See, अब ये देखो कि अब देखो, जब लास्ट समर में हीट वेव चल रहा था तो हम सब कितना ज़्यादा हम सब ने सफ़र किया था, राइट? और टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई था, और वही इमेजिन करो कि इट इज़ हैपनिंग इन ओशन, बट दिस heat wave, this condition, it continues for months or even years. तो ये होता है मरीन हीट वेव में कि बहुत सालों साल तक चलता रहता है. ओके, तो अभी हो क्या रहा है, कहाँ की बात हम कर रहे हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. Okay, so in January, off the coast of Western Australia, around 30,000 fish died due to extreme ocean temperature. Okay, so around 30,000 fish off the coast of Western Australia in January, that were made up to 100 times more probable due to climate change. So 30,000 fish died due to extreme ocean temperature. And this marine heat wave began in September 2024. It began in September 24 last year and it is still going on. So scientists found that climate change made it up to 100 times more likely to happen. Okay, because of climate change. क्लाइमेट चेंज की वजह से 100 टाइम्स इट इज मोर लाइकली टू हैपन, और ज्यादा होगा, और ज्यादा चांसेस होंगे मरीन हीट वेव के होने के. एंड सम एरिया सॉ सी सरफेस टेम्परेचर राइज बाय 2 degrees Celsius, 2 degrees Celsius, which is a huge jump for ocean ecosystem. And this is now the second worst marine heat wave in Western Australia's recorded history, पूरे recorded history में देखा जाए तो. And worst happened in the year 2010 11 में. तो 2010 और 11 में सबसे ज़्यादा हुआ था, और उसके बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट है कि मरीन हीट वेव ओशन में आया है ऑफ द वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है वहाँ पर, और जिसकी वजह से वहाँ पे 30,000 फिश की डेथ हो गई है. राइट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, why are marine heat waves increasing? Marine heat waves क्यों increase हो रही है? Reason being, we all know the reason. It's only because of climate change. Okay, so it's because of climate change. See, the Earth's temperature has risen by 1.3 degrees Celsius
It has risen by 1.3 degrees Celsius after the pre-industrial level. And 90% of this extra heat has been absorbed by none other than ocean. ओके, सो 90% जो राइज हुआ है टेम्परेचर, उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको ओशन ने एब्जॉर्ब किया है. सो एज अ रिजल्ट ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 0.9 डिग्री सेल्सियस. तो जो पूरा टेम्परेचर, मतलब अगर आप कहें बात कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है. सी, इसके वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है मरीन लाइफ को. कैसे? क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो मरीन इकोसिस्टम के लिए डिजास्ट्रस है. सबसे पहला जो जो हमने अभी भी देखा रिसेंटली कि 30,000 फिश की डेथ हुई है. सो मास फिश डेथ्स लाइक व्हाट हैपेंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. सो फिश एंड अदर सी क्रीचर्स दे कांट सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, right? And this marine heat wave, it is disastrous for marine ecosystem. Moreover, kelp forests provide food and shelter for many species, but marine heat waves destroy them, leading to habitat loss. All right. And then we have already covered many times coral bleaching, है ना. कोरल ब्लीचिंग हमने बहुत बार कवर किया है. कोरल ब्लीचिंग, right? So coral turns white and it become weaker, making them more vulnerable to diseases. So if corals die, thousands of marine species lose their home. Why? Because they are dependent on coral, है ना. सो दीज अफेक्ट्स डोंट जस्ट इम्पैक्ट मरीन लाइफ, दे ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन टू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो मरीन लाइफ को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है. सी, fishing industries, they're gonna suffer. Coastal communities that depend on marine resources, they face economic losses. And this crisis is happening right now. And if global temperature keep rising, things will only get worse. तो चीज़ें और ज़्यादा खराब ही होंगी, टेम्परेचर राइज से ठीक नहीं होंगे. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस और सीरियस एक्शन लिया जाए. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू इंडिया, where a major decision has raised concerns about air pollution. See, India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently pushed back the deadline for thermal power plants to comply with sulfur dioxide emission norms by 3 years. Okay, so they have basically pushed back the deadline. This means that power plants now they can continue polluting longer despite existing deadlines already being delayed multiple times. Okay, so what are these rules? Basically, back in the year 2015, the government introduced new emission norms to control air pollution, and these norms were meant to reduce the particulate matter जो होते हैं पीएम जैसे, तो particulate matter को reduce करना है, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना है, विच कॉज एसिड रेन एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस. सो एट फर्स्ट ऑल थर्मल प्लांट्स वर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई बाय 2017, but the deadline kept getting pushed, first to 2022, then 24, and now to 27 for many plants. So why the delays? The main issue is cost and technology. To cut sulfur dioxide emission, plants, these thermal power plants जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, दैट दे आर यूजिंग कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो और वहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, sulfur dioxide emission is releasing, particulate matter is also releasing, and these are not good for our health as well as for environment. So the government has basically set a deadline that by this time we have to reduce these emission, but this deadline it kept getting pushed back by the government only.
So first the deadline first the deadline was set to 2022, then 24, and now it is set for 27. So experts are saying, why are the delays, why it is happening? See, the main issue is cost and technology. To cut sulfur dioxide emission, plants need to install a technology called FGD. FGD इसको full form क्या है? Flue gas desulfurization. Okay? So to cut sulfur dioxide emission from thermal power plants, they need a technology called flue gas desulfurization. फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? FGD टेक्नोलॉजी. बट FGD टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव and its supply chain is quite weak in India. So Central Electricity Authority, CEA ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली और CSIR को यू नो जो जो वहाँ से जो स्टडी मिली, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इट देयर शुड बी मोर फोकस ऑन पर्टिकुलेट एमिशंस इंस्टेड ऑफ SO2, because they argue that the current norms may not be best fit for India's energy sector. ऑल राइट, सो उन्होंने कहा कि SO2 की जगह पर्टिकुलेट मैटर पे भी फिलहाल ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. नाउ द क्वेश्चन इज, हु पेज द प्राइस? See, while power companies, they delay compliance, the public suffer. Public is suffering, na? We are suffering. As a consumer, we are suffering. Why? See, many plants have already signed contracts to install FGD. है ना, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने, they have already signed the contract, but they may never use them because of high cost. And electricity consumers, they will bear the financial burden even though pollution levels won't improve. तो हमारे लिए तो भाई ये एक मुसीबत पे मुसीबत है, क्योंकि वी आर ऑल्सो फेसिंग फाइनेंशियल बर्डन एंड pollution levels are not even improving. Moreover, people who are living near power plants, they continue breathing polluted air. So this will lead to health problems like asthma and lung diseases. And this situation has created frustration, especially among environmental activists and citizens who argue that repeated delays show a lack of commitment to environmental protection. All right, तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में मेंशन है. So what's the takeaway? See, both stories highlight how climate change and environmental regulations directly impact us. Marine heat waves, they are destroying ecosystem, and without urgent climate action, they will keep getting worse. And talking about India's emission rules, they are being delayed, right? So this will risk public health and making it unclear when it is quite important that there should be real improvements. तो अगर क्लियर नहीं होगा और अभी भी डिले ही होता रहेगा तो पब्लिक सफर करेगी. सो गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स, दे मस्ट वर्क टुगेदर टू टैकल दीज चैलेंजेस. ऑल राइट, तो साथ साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इशू है, उसको टैकल किया जा सके. ऑल राइट, so that's it for today. If you found this information useful, like, share, and subscribe for more deep dive issues. And let's keep the conversation going. Comment your thoughts below. Like, what do you think about the rules regarding the thermal power emission? All right, students, see you in next episode. Bye bye.